Hello champions, welcome to the next lecture on the Legendre polynomial. Today we will discuss the orthogonal property of the Legendre polynomial. Myself Dr. Harish, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the ordinary differential equation. The last lecture was on the properties of the Legendre polynomial, generating function, Rogers formula, Legendre polynomial and many more lectures in this playlist. As I mentioned you, we already covered the first 6 lectures related to the Legendre equation. Now today I will cover the lecture number 7 named as orthogonal property of the Legendre polynomial. बच्चों एक बात याद रखना, जब भी हम 11th लेक्चर को डिस्कस करेंगे, all these lecture that I had uploaded for you is very helpful. So that's why I'm asking you, you can subscribe my YouTube channel so that whenever I will upload my new video, you will get the notification. Now, the orthogonal property is one of the most important property in the Legendre polynomials. As we all know, in the periodic functions, whenever you have the sine and cosine functions, we all know sine of mx into sine of nx. It will be 0 provided m is not equal to n. The similar property is hold for the Legendre polynomials. If p n x and the p m x are my Legendre polynomial, then integration from -1 to +1 whenever m is not equal to n is my 0. This property is very important. Whenever we can think on the vectors, we know whenever a dot b is my 0, that means the orthogonal vectors are independent. The similar concept is also hold for the Legendre polynomials. That means we can consider the p0, p1, p2 are my mutually orthogonal. What is the meaning of the mutually orthogonal? That means if you take integration from -1 to 1, p0 into p1, that will be 0. Similarly, p0 dot p2, that will be 0 and so on. I can take first of all the simple example and then I can prove you the general properties. अगर आपको ये प्रूव करना हो -1 to 1 p0 into p1, बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए. तो यू कैन से व्हाट इज द p0 1 into x. So clearly say when you integrate them, that will be 0. It's an odd function, integration is 0. Similarly, if you look about that p1 dot p2, fine. So if you substitute the value of the p1 and p2, half will be outside, -1 to +1 x into 3x square minus 1 into dx. So if you open this bracket, it's a 3x cube. So once you integrate the 3x cube, 3x की power 4 minus 4 minus x square divided by 2 from -1 to 1. If I substitute the value, that comes to be 3 by 4 minus half minus 3 by 4 minus plus half, and clearly say half and half will be cancelled, 3 by 4 is cancelled and so on. So in general, whenever you have pm into pn, that is always 0 provided m is not equal to n. So I can prove it in a general manner. What is the orthogonal property of the Legendre polynomial? The orthogonal property is whenever m and n are not equal, then the answer is 0, while whenever m and n are equal, then we can say it's a 2 divided by 2n plus 1. What is the meaning of this m and n are same? That means whenever you are interested to find -1 to 1 p2 into p2, fine. तो आपका आंसर क्या था? 2 over 2n plus 1. So n is my 2. So the answer will be 2 into 2, 4. 2 over 5 is the answer. Similarly, if someone wants to calculate the p7 into p7, the answer will be 2 divided by n is my 7. 7 to the 14 plus 1, 15 is the right answer. Fine. So now let's start with the proof of this result. So case 1, whenever m is not equal to n. Now we all know pn and pm are the solution of the Legendre differential equation. तो अगर ये इसका solution है,
व्हाट डज इट मीन्स, ये इसको सेटिस्फाइड भी करेगा. दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी ऑफ एन डबल प्राइम माइनस 2x पी एन प्राइम प्लस n into n plus 1 pn is equal to 0. Similarly, I can write for the p of m, pm double prime minus 2x pm prime plus m into m plus 1 of pn. Now look at that, my target is to find pn into pm. तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को pm से मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट इट बिकम्स pn into pm, और इक्वेशन नंबर 2 को pn से, एंड आफ्टर दैट आई कैन सब्ट्रैक्ट दैम. तो जैसे आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म. इट इज क्लियरली से दैट इज माई डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एन प्राइम इंटू पी एम माइनस पी एम प्राइम इंटू पी एन. आप प्रोडक्ट रूल लगा के देख लो, यही बनेगा प्लस n minus m n plus m plus 1 into pn pm is equal to 0. Then you can integrate. Fine, integrating both side from minus 1 to plus 1. तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा. दैट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम पी एम माइनस पी एम प्राइम इंटू पी एन फ्रॉम -1 टू +1, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगी -1 टू m n माइनस एम n प्लस एम इंटू पी एन पी एम डी एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ क्लियरली से दैट component is my constant which can be taken outside. When you substitute x, upper limit x, that will goes to the 0. When you substitute the lower limit, again it will be 0. Since n is not equal to m, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा. So I can put on the left hand side to be the right hand side as a 0, which implies pnx into pmx is my 0 is the required first part of the orthogonal property. Second part, whenever m is equal to n, then your target is to prove this expression. Fine. So again very simple, I can start from the generating function of the Legendre polynomial. इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को. सो p of 0x प्लस p1x इंटू टी प्लस p2 एंड देन सो. अब आपको क्या चाहिए, स्केयर. सो आई कैन पुट स्केयरिंग ऑन द बोथ साइड. फाइन. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्केयर रेस्ट पावर -1. राइट हैंड साइड इसका स्केयर करना आपको. इट लुक लाइक a प्लस बी प्लस सी एंड देन सॉन. तो इसका स्केयरिंग करके क्या बनेगा, एक तो आएगी a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर एंड सॉन, और एक बनेगी 2ab की टर्म, फिर एक 2bc की टर्म एंड सॉन. सो आई कैन राइट a स्केयर b स्केयर c स्केयर, आई कैन राइट एज ए pn स्केयर. फाइन. इंटू t ऑफ n स्केयर. ये बिकॉज दिस इज माई a b c, तो इसको इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ, pn, इसका स्केयर हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. तो अगर मैं p0 और p1 को ले रहा हूँ, इन जनरल आई कैन राइट एज ए pi इंटू pj, वेयर i इज नॉट इक्वल टू j एंड i एंड j स्टार्ट फ्रॉम द 0 to n. और साथ में जब आप इसको करोगे फाइन, तो 2ab में t इंटू टी स्केयर भी आएगा. सो आई कॉल एज ए i प्लस j. Clear? Now you can integrating on the both side from -1 to +1. Clear? तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, -1 to +1 whenever I is not equal to j. So by using the first part, that will goes to the 0. Clear? So that quantity will goes to the 0. राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं जो बाकी रह गया वो कांस्टेंट है. फाइन. -2xt इंटू डी एक्स. तो ये क्या बन गया बेसिकली, से लेट्स से दिस ए कांस्टेंट a माइनस 2x. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज माई लॉग ऑफ कांस्टेंट -2xt
डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। सो दैट विल इम्प्लाइज log ऑफ 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्र डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2t फ्रॉम -1 टू +1, और इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। फाइन, बिकॉज दैट क्वांटिटी विल गोस टू द जीरो। अब आप इसमें फिल कर दो। अपर लिमिट विल बी, when you substitute x is 1, so that will be 1 minus 2t plus of t square, so that will be 1 minus t raised to power square divided by minus of 2t minus, if you substitute the lower limit, that will give you 1 plus t square divided by minus of 2t। इसको आप ऐसा ही रहने दो। क्लियर? इस पावर 2 को आगे ले जाओ। फाइन, माइनस ऑफ 2t इज एलसीएम, 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी log ऑफ 1 माइनस टी माइनस log ऑफ 1 प्लस टी, और माइनस ऊपर से और नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो आप। फाइन, आई कैन अप्लाई द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट इज द log ऑफ 1 प्लस एक्स, दैट विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, x क्यूब बाय 3 एंड so on. I can substitute the expansion of the log 1 plus t a log 1 minus a. Bracket open कर दो. Denominator will be the t. So clearly say t square by 2, t square by 2 cancel. Fine. So that will be twice of t minus minus plus twice of t cube divided by 3 plus twice of t raised power 5 over 5, because t raised power 4 will be cancelled out, and so on. Clear? I can take in 2 as a common. Fine, I can take in 2 as a common, so and separate them. That will be 1 plus t square over 3 plus t की power 5 or t की power 4 divided by 5 and so on. I can write in terms of the series, n varies from 0 to infinity. Power 2, देखिए इवन पावर चल रही है आपके पास, so that will be 2 की power n. यहाँ पे क्या चल रहा है? 3, 5, दैट्स द ओ टर्म, 2n प्लस 1। फाइन, और ये वाली एक्सप्रेशन। नाउ यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2n ऑन द बोथ साइड। इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2n ऑन द बोथ साइड, you will get the expression of the required proof. Fine. So this is a simple way you can prove the orthogonal property of the Legendre polynomials. So that means whenever you have the Legendre polynomial, it must satisfy the orthogonal property defined as whenever m and n are equal, then it is a 2 over 2n plus 1, and whenever they are not equal, then it will be 0. We will see the next lecture on the recurrence relation, such as all these 6 important formula for the recurrence relation. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on it. Happy learning, students. Best of luck.